नहीं, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, and process of accounting. Today we are discussing the branches of accounting. The branches of accounting are three: financial accounting, cost accounting and management accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग 11th में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हायर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग is that branch of accounting which records financial transactions and events, summarizes and interprets them and communicates the results to the users. It ascertains profit earned or loss incurred during the accounting period and financial position on that date when the accounting period ends. The end product of financial accounting is the profit and loss account for the year ended and balance sheet as on last date of the accounting period. Second होता है कास्ट अकाउंटिंग. The limitation of financial accounting in respect of information relating to the cost of product or services led to the development of specialized branches. Cost accounting, it ascertains the cost of product manufactured or service rendered and help the management in decision making. Next, management accounting. Management accounting is the most recently developed branch of accounting. It is concerned with the generating accounting information related to the fund, cost, profit, etc. As it enables the management in decision making, we may say that management accounting addresses the needs of a single user group, that is the management. So these are the branches of accounting. Next, bookkeeping, accounting and accountancy. The terms bookkeeping. Bookkeeping means the bookkeeping is a part of the accounting having a process of recording of financial transactions and events in the books of account. Thus, bookkeeping involves बुककीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे. देन मेजर देम इन द टर्म्स ऑफ मनी. तब मनी के टर्म्स से उसको मेजर किया जाएगा. जब मेजर हो जाएगा उसके बाद रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट हम अर्लियर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. उसमें सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो क्लासीफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, दैट इज द वर्क ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर. ये वर्क इन्वॉल्व होता है ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करने का. दैट इज ए बुक कीपिंग. ठीक है. बुक कीपिंग डिफिनीशन क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द monetary aspect of the commercial and function transactions. Next, accounting. Accounting क्या चीज़ है? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial data and interpreting the results thereof. Accounting is a wider concept than bookkeeping. It is a start where bookkeeping is end. In other words, bookkeeping is a part of the accounting. नेक्स्ट, अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी इज a systematic knowledge of accounting. It explains how to deal with the various aspects of accounting.
It educates us how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicate to the users. That is the work of accountancy. इसे हम accountancy कहते हैं. अब accounting और accountancy में क्या difference है? Accounting is an area of knowledge, whereas accounting is the action or process used in this area. Accounting depends on the rules and principles formed by the accountancy, but accountancy does not depend on accounting. Thus, it may be said that accountancy is the knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy.